प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय, अमरावती। आज एडवांस एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंसी विषय पर आपके क्विज क्विज नंबर 5 MCQs लेकर के उपस्थित हूँ। आइए आज के नए MCQs हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ क्लोजिंग स्टॉक given in trial balance should be admitted in A. trading account, B. profit and loss account, C. balance sheet, and D. none of these. So correct answer is C. balance sheet. So if closing stock given in trial balance should be admitted in balance sheet. Next, manufacturing account shows cost of production, gross profit, net profit, or none of these. So correct answer is cost of production. Manufacturing account shows cost of production. Next, number 3, discount allowed is shown on A. debit side of profit and loss account, B. debit side of trading account, C. asset side in balance sheet, and D. in depreciation account. So right answer is A. debit side of profit and loss account. Discount allowed is shown on debit side of profit and loss account. Okay. Next, number 4, opening stock of finished goods is admitted on debit side of A. trading account, B. profit and loss account, C. balance sheet, and D. none of these. So right answer is A. trading account. Opening stock of finished goods is admitted on debit side of trading account. Next, sales of scrap is shown on credit side of trading account, debit side of profit and loss account, credit side of manufacturing account, and D. none of these. So correct answer is C. credit side of manufacturing account. Sales of scrap shown on credit side of manufacturing account. Next, following is not tangible asset: A. building, B. machinery, C. goodwill, and D. laptop. So right answer is goodwill. Goodwill is not a tangible asset. Number 7, the assets which are not necessary for operation of business are called A. fictitious assets, B. operating assets, C. non-operating asset, and D. contingent asset. So right answer is C. non-operating assets. The assets which are not necessary for operation of business are
called non-operating assets. Okay. Number 8. Number 8 is these are the assets, the existence, value and ownership of which depend upon the occurrence or non-occurrence of a specific event of performance or non-performance of a specified act is known as A. fictitious asset, B. operating asset, C. non-operating asset and D. contingent asset. So, right answer is D. contingent asset. These are the assets, the existence, value and ownership of which depend upon the occurrence or non-occurrence of a specific event of performance or non-performance of a specified act is known as contingent asset. Number 9. Sale value minus cost of goods sold is equal to A. gross profit, B. net profit, C. asset and D. none of these. So, right answer is gross profit. Sale value minus cost of goods sold is equal to gross profit. Next, suppose cost of goods sold rupees 1,50,000 and cost of goods in hand is rupees 6,000. What is the value of cost of goods sold? Number A 1,56,000, B 1,46,000, C rupees 1,44,000 and D none of these. So, right answer is rupees 1,44,000. तो आपने आज यहाँ 10 क्वेश्चंस देखे और यहाँ पर मित्रों मैं एक करेक्शन चाहूँगा जो मैंने भूलवश मेरी जो टेक्निकल मिस्टेक से कहें या मेरी त्रुटि के कारण आपने जो वीडियो क्रमांक 2 MCQs 2 देखा उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसको मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ और उसको करेक्शन दे रहा हूँ तो आप इस करेक्ट आंसर को जान लें. रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू assets A, B expenditure losses, incomes and gains, C customers and creditors, D none of these. So, correct answer is A assets. तो आप लोगों के बीच में कुछ श्रोता या जो कुछ दर्शक हैं जिन्होंने वीडियो को बहुत ही गहराई से देखा उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को याद दिलाया और मैंने भी देखा कि इस जगह पर कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण गलती हुई और ये करेक्ट आंसर आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लें कि रियल अकाउंट्स जो है वो असेट्स से रिलेटेड होते हैं और आप इसी तरह से अलर्ट रहकर मेरे वीडियो को देखते रहें और आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे. अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए वीडियो नया नॉलेज हमेशा मिलता रहे. धन्यवाद. नमस्कार.